दो थ्योरी थी। एक तो थ्योरी थी कि सपोज कोई स्क्वायर बना हुआ है, उसमें हम ना होल्स ड्रॉ कर देते हैं। सपोज स्क्वायर में 9 होल्स हैं, तो आइडेंटिफाइड है कि इनमें से कौन कौन से सिविल रॉन्ग है। सिर्फ आप उन्हीं के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। दूसरी थ्योरी थी यूबी जस इबी रेमेडियम। सुना है आपने? सुना है? यूबी जस इबी रेमेडियम कहते हैं जहां पे भी रॉन्ग हुआ है वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? रेमेडी देना पड़ेगा। दोनों में से जो सेकंड थ्योरी थी ना, यूबी जस इबी रेमेडियम की, विद पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हुआ कि यही ठीक थ्योरी है। प्रूव कैसे हुआ? हमने देखा विद पैसेज ऑफ टाइम नए नए टॉट्स ऐड हुए। जैसे नेग्लिजेंस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन से ऐड हुआ, फॉल्ट लाइबिलिटी ऐड हुआ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर से। तो नए नए टॉट्स ऐड हुए, इसका मतलब नए सिविल रॉन्ग्स भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। टॉट ऑफ एलिनेशन ऑफ अफेक्शन क्या होता है? जब आप किसी से क्या कर रहे हैं? एलियनेट कर रहे हैं। वो कहते हैं ये भी एक सिविल रॉन्ग है। इसमें उसने प्लीड किया था जो इंदिरा शर्मा ने कि मेरे से क्या है? एलियनेट हो रहा है, अफेक्शन कम हो रहा है। इसको हम कहते हैं टॉट ऑफ एलिनेशन ऑफ अफेक्शन। ये लिखिए, उसके बाद हम वो दोनों केसेस को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, टॉट ऑफ एलिनेशन ऑफ अफेक्शन। इसमें लिखिए, इंदिरा शर्मा की बात कर रहे हैं, उसे पता था ना वो ऑलरेडी मैरिड है। इसमें लिखिए, इंदिरा शर्मा, इंदिरा शर्मा had entered into the relationship knowing well that the respondent, VKV शर्मा को हम लिख रहे हैं, respondent was a married person and encouraged by gamous relationship. By entering into such a relationship, she has committed an intentional tort. कुछ गलत किए इंदिरा शर्मा ने? कुछ गलत किए? आपने किसी के मैरिटल रिलेशन को अफेक्ट करने की कोशिश की है। इसमें लिखिए, क्या लिखा आपने? इंटेंशनल टॉट दैट इज इंटरफेरेंस in the marital relationship with intentionally alienating respondent from his family. Intentionally alienating अलग कर देना बेटा, alienating respondent from his family, that is wife and children. Thus there is an attempt on her part to alienate the respondent from his family
resulting in loss of marital relationship, comma, companionship, comma, assistance, comma, loss of consortium, loss of consortium, consortium, etc. So far as legally wedded wife and children of respondent are concerned, who resisted the relationship concerned, who resisted the relationship from the very inception. Marriage and family are social institutions. Marriage and family are social institutions of vital importance. Importance, beta. Full stop. Alienation of affection is an intentional thought as held by this court in Pinakin, 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 Mahipatre, Mahipatray, Mahipatre, Raval's case, which gives cause of action to the wife, cause of action, beta, cause of action to the wife and the children of respondent to sue her for alienating husband oblique father from the company of his wife oblique children, knowing fully well अच्छी तरह पता था that they are legally wedded. इस डिस्कशन का कंक्लूजन कर रहे हैं, एंड में कंक्लूड किया क्योंकि इनका रिलेशनशिप में मैरिज जैसा कोई रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, तो वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं हो सकता, इसलिए जो इंदिरा शर्मा था उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला डीवी एक्ट का, इसमें लिखिए. 10 कंक्लूजन है बेटे. 10 इंदिरा शर्मा was fully aware of the fact that the respondent was a married person and could not have entered into a live-in relationship in the nature of marriage. .
all live in relationships, all live in relationships, all live in relationships are not relationships in the nature of marriage. Full stop. There is no inherent or essential characteristic कोई करेक्टर ही नहीं है मैरिज में, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ना बच्चे हुए हैं, जो भी हमने उसमें लिखा था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैरिज. Thus, it is a relationship other than in the nature of marriage. Her status was that of a mistress who is in distress, comma, a survivor of a live-in relationship which is of serious concern. Which is of serious concern, especially when such persons are poor and illiterate, therefore, Parliament should frame law for children born out of such relationship. Born out of such relationship. लिख लिया आपने? नेक्स्ट केस लिखो बेटा. नंद कुमार, NANDA, नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सुप्रीम कोर्ट. ब्रैकेट में लिख लो हादिया केस. आप सबने इसके बारे में बहुत सुना होगा. हादिया केस. स्लैश डाल दो हादिया केस के बाद. शाफिन जहांस केस भी लिख सकते. शाफिन जहांस केस. वैसे तो हमारे लिए एक लाइन इसकी रूलिंग ही इंपॉर्टेंट है, पर हमें पता होना चाहिए केस क्यों इतना लाइमलाइट में आया था. क्लियर है? फैक्ट्स लिखिए. फैक्ट्स लिखिए. अखिला अशोकन, लड़की का असली नाम है अखिला अशोकन. फादर की कास्ट है ASOKAN. अखिला अशोकन, ब्रैकेट में लिख लो हादिया जान. कन्वर्टेड टू इस्लाम during her medical studies in Coimbatore. COIMBATORE. Coimbatore
She met Muslim man named Shafin Jahan. Shafin Jahan, beta, Shafin. Shafin Jahan, and married him at age of 25. Father K.M. Asokan, Asokan. Father K.M. Asokan filed writ petition in Kerala High Court alleging his daughter was misled and forced to become Muslim. Shafin had links to extremists, Muslim organizations. Hadia maintained throughout the proceedings that her conversion as well as marriage was of her own volition. अपनी मर्जी से, VOLITION. नेक्स्ट पैराग्राफ. जस्टिस सुरेंद्र मोहन and Abraham Matthew जहां से शुरू किया ना, जस्टिस सुरेंद्र मोहन, उसके आगे लिख दो हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में ये हुआ. Justice Surendra Mohan and Abraham Matthew annulled marriage and called it a sham. Called it a sham. धोखा है, लड़की के साथ धोखा हुआ है, ये रियलिटी में मैरिज नहीं है. बिल्कुल ठीक है. मैरिज बीइंग most important decision could be taken by active involvement of parents only. Court granted custody to father, ignored fact that Hadia, a legal adult, did not consent to parental custody. Next paragraph. 3-judge bench in Supreme Court set aside annulment
Initially, the bench was headed by Chief Justice Keher, who took extraordinary step of ordering the NIA. क्या है NIA? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना? यस, क्या लिखा आपने? कैपिटल है बेटा, NIA ना सारा कैपिटल है। क्या लिखा? टू इन्वेस्टिगेट हादिया's marriage. CJI Keher retired. Keher retired during hearing, and Chief Justice Mishra took over him. क्लियर है? ये तो हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लिखा है, अब है प्योर फैक्ट्स। क्या झगड़ा पड़ा था, क्या हुआ था, वो हम लिख रहे हैं। फैक्ट्स लिखो, फैक्ट्स। हादिया, हादिया या अखीला एक ही बात है, मतलब दोनों का, ये तो पता ही चल गया। हादिया was 26 years old, only child of Shri Asokan, only child of Shri Asokan, completed degree in homeopathic medicine, that is BHMS, MS, full stop. Initially residing in college hostel, but later on she started staying in a rented house near her college, together with 5 other students, including Jasina and Fasina, Jasina and Fasina, who were daughters of Abu Bakr. Hadia's grandfather died. Family members noticed change in her behavior as she was reluctant to participate in rituals performed. She went to Salim, SALEM. She went to Salim for internship
सलीम जगह का नाम है बेटा, SALEM, फॉर इंटर्नशिप along with Jasina and Fasina. She was in constant touch with her family. On 6th January 2016, father received call. 6 January 2016, father received call from one of friends that Hadia had gone to college on that day wearing a parda and someone is inspiring her for change of faith. Mother called Hadia मदर ने कॉल किया कि फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, बट हादिया डिड नॉट रीच हर फादर्स हाउस. Jasina and Hadia left for parents' place. हादिया चले तो घर पहुंचने के लिए थे, पर कभी भी पहुंची नहीं. बट शी नेवर रीच्ड होम. पेरेंट्स प्लेस बट नेवर रीच्ड होम. अशोकन जो फादर है, अशोकन वेंट in search of her and came to know that she was residing in Abu Bakr's house. Who promised him that he would bring Hadia, to the house of one of Hadia's friend. But Asokan was informed that Hadia had escaped from that place and had run away somewhere. Run away somewhere. क्लियर है? तब फादर ने रिट फाइल किया था हेबियस कॉर्पस का, और ये सारा डेवलपमेंट हुआ. बेटा इस केस में जब देखा गया कि मैरिज हुई भी है या नहीं है, तो जो, अब हमें नहीं पता हस्बैंड था या नहीं था, जो शाफिन जहान है, उसका जो सोशल नेटवर्क जो अकाउंट था फेसबुक का, उससे एक बड़ी पेक्यूलियर चीज थी. कुछ लोगों की ना आदत होती है, काम बाद में करते हैं, पहले किस पे डाल देते हैं, फेसबुक पे, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं. तो जज ने बहुत इस चीज को गौर किया कि जितने भी उसके अकाउंट्स थे ना, ब्रश करना है, फिर पहले ब्रश की फोटो डल जाती थी,
दिन के डेली उसका ये अकाउंट था। तो सबसे बड़ा जो डाउट वो क्यों है राइज हुआ, क्योंकि मैरिज जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का कहीं पर भी उसके अकाउंट में मेंशन नहीं था। तब जजिस को लगा कि शैम मैरिज है, रियलिटी में हुई नहीं है, सिर्फ लड़की को कन्वर्जन के लिए कराने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने एनआई का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा जितना भी हाई कोर्ट ने किया, बड़े इस जज जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जब ऑर्डर हुई थी ना, टीवी पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस जजमेंट को। अगर आप आज भी देखेंगे यूट्यूब पर आपको आज भी वीडियोस मिलेंगे, हादिया के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को अगर कोई मैरिज कर रहा है उसे इस एक्सटेंट तक जाना चाहिए। उन्होंने ये तो कह दिया कि पेरेंट्स की मर्जी होनी चाहिए, पर वो ये फैक्ट भूल गए हादिया एक मेजर है और वो अपनी कंसेंट से कुछ भी कर सकती है। तो इस फैक्ट को ना उन्होंने बहुत लाइटली लिया। लाइटली ऐसा नहीं कि वो लेना नहीं लेना चाहते थे, क्यों, हमारी जो सोसाइटी है ना उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हुई हुई है कि अगर गर्ल्स हैं, ये एक नोशन बना हुआ है कि जो गर्ल्स है वो किस अपने पेरेंट्स के हिसाब से मैरिज करती हैं। पेरेंट्स में हम 100% ट्रस्ट और फेथ को रिपोज करते हैं कि वो जो बच्चे के लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन में पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, तो हमें डाउट क्रिएट होता है कि मैरिज सच में है भी या नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंडिविजुअल है, आर्टिकल 21 कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये सबसे बड़ा लिबर्टी का पार्ट है ये डिसीजन कि आप किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। बीच में अगर कोई मेजर है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, बाकी किसी को इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है प्लीज, इसमें लिखिए, इसमें द सुप्रीम कोर्ट held that the main purpose of writ of habeas corpus is that no one is deprived of his or her liberty without sanction of law. The role of the court, the role of the court is to find out about his or her independent choice and see to it that the person is released from illegal restraint. The issue will be different one when the detention is not illegal. Full stop. What is seminal? SEMINAL. What is seminal is to remember
The social values and morals have their space, but they are not above the constitutionally guaranteed freedom. Constitutionally guaranteed freedom. The said freedom is both a constitutional and a human right. Deprivation of the freedom which is ingrained in choice on the plea of faith is impermissible. Faith is impermissible. Faith of a person is intrinsic to his or her meaningful existence. Full stop. It needs no special emphasis to state that attaining the age of majority in an individual's life has its own significance. He/she, he के साथ she भी, is entitled to make his or her choice. The courts cannot assume the role of parents patriae as long as the choice remains. The daughter is entitled to enjoy her freedom as the law permits, and the court should not assume the role of a super guardian being moved by any kind of sentiment of the mother or the egotism, ego के बाद PISM, egotism of the father. लिख लिया? बेटा मैंने केस का नाम आपको गलत लिखवा दिया.
वो मैंने नेक्स्ट केस का लिखवा दिया, नंद कुमार वाला। आप केस का नाम लिख, नेक्स्ट केस का है नंद कुमार वाला नाम, सिर्फ नाम, बाकी सब ठीक है। हादिया का ही केस है ये। जो शुरू में क्या नाम लिखा है, ये अगले इस पे लिख दो, पेज पे जहां ये खत्म हुआ है ना, नेक्स्ट केस है, वहां लिख दो। नंदा है, लिख दिया। इसका नाम लिखो, शाफिन जहान, शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम। शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम, 2018, एससीसी ऑनलाइन, एससी ऑनलाइन, फिर कैपिटल में एससी 343। क्लियर है? केस का नाम था शाफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम। नेक्स्ट केस लिखो, नेक्स्ट केस लिखो, लिख लिया ना, नंद कुमार वर्सेस केरला। इसमें आप लिखिए, जो नंद कुमार है ना, वो लड़का है जो लड़की के साथ भाग भूग गया, लड़की जिसमें हम इसको हस्बैंड, जिसको लिव इन रिलेशनशिप में जो आदमी है वो नंद कुमार है। क्लियर है? इसमें लिख दीजिए। लड़की का नाम तुषारा है, THU, तुषारा लिखिए। तुषारा 19 years of age, married with Nand Kumar, Nanda Kumar, at temple on 12/4/2017। फादर, जो तुषारा का फादर था, फादर फाइल्ड writ of habeas corpus that his daughter was missing and in illegal custody of appellant. High Court directed to trace out and produce Tushara. SI of police produced detenue in court. High Court interacted with parties including Tushara at time of marriage. The appellant, नंदा कुमार की बात कर रहे हैं, was less than 21 years of age, and he was not of marriageable age. He was not of marriageable age. High Court held that Tushara was not lawfully wedded wife, as there was no evidence to show
that valid marriage was solemnized between the parties. Solemnized between the parties. Full stop. Even certificate of marriage was not produced. High Court entrusted custody, यहाँ बेटा, entrusted custody, ENTRUSTED, दे दी, entrusted custody of wife to her father. जो तुषारा है उसके फादर को वापस कर दिया उसको. अल्टीमेटली फिर नंद कुमार ने किसका नॉक डोर किया? सुप्रीम कोर्ट का. क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. अल्टीमेटली मैटर रीच सुप्रीम कोर्ट, where Supreme Court held that it is sufficient to note that both Nand Kumar and Tushara are major. Full stop. Even if they were not competent, to enter into wedlock, they have a right to live together even outside wedlock. इसका मतलब किसकी बात कर रहा है ये? बिना शादी के इकट्ठे रहना. तो बात किसकी हो रही है? लिव इन रिलेशनशिप. इसमें लिखिए. इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन that live-in relationship is now recognized by the legislature itself, which has found its place under the provisions of Protection of Women from Domestic Violence Act 2015. क्लियर है? आगे लिखिए. thus the Supreme Court has recognized that two adults have right to live together even if they have not attained the marriageable age. Clear है? Next देखिए. Yes.
एक लिखो भाई, ये उसमें रह गया, इंदिरा शर्मा में चौथा इश्यू रह गया। अब लिख लो, मैं आपको इमेज ही सेंड कर रही हूँ इस पेज की। बेटा हिंदू मैरिज एक्ट में तो लड़कियों की 18 है और लड़कों की 21 है। आप क्वेश्चन मतलब डिपेंड करता है ना, मुस्लिम्स में एज अलग है, हिंदूज में एज अलग है। अब ये प्रपोजल आया हुआ है दोनों को 21-21 कर दो। कुछ पूछ रहे हैं आपने? बेटा ना, जो लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस का कंसेप्ट है ना, उसको पेलिमनी कहते हैं, एलिमनी नहीं कहते। क्या कहते हैं? पेलिमनी। ये आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। वो ही कर रहे हैं बेटा, पर आपको आगे ही लिखना पड़ेगा ना, आप लिख लेना। कंसेप्ट ऑफ, हेडिंग डाल दो, कंसेप्ट ऑफ, हाँ बेटा, कंसेप्ट ऑफ पेलिमनी concept of palimony, that is right to maintenance in live-in relationship. Live-in relationship with special reference to Indira Sharma's case. देखो बेटा, आपको डॉक्यूमेंट भेजा है अभी, मिल गया ना? मैं रीड कर रही हूँ, आप देख लेना। The expression palimony was coined in USA by California Superior Court in 1976 in the famous case of Marvin versus Marvin. Palimony means a grant of maintenance to a woman who has lived for a substantial period of time with a man without marrying him and is then deserted by him. This case was related to the famous film actor Lee Marvin, with whom Lady Michelle lived for many years without marrying him and was then deserted by him. She claimed palimony. Subsequently, in many decisions of courts in USA, the concept of palimony has been considered and developed. The US Supreme Court has not given any decision on whether there is any legal right to palimony, but there are various decisions of courts in various states in USA. The courts in USA have taken divergent views, some granting palimony, some denying it altogether, and some granting it on certain conditions. Hence, in USA, the law is still in state of evolution on the right to palimony. In India, it was only in the year 2010 when the Supreme Court of India for the first time discussed the meaning of word palimony in the case of Chanmunia versus Virendra Kumar Singh Kushwaha and D. Velusamy versus D. Pachiamal, and came to the conclusion that palimony could be granted in the case of live-in relationship. In India, the palimony is granted under various provisions like Section 25 of HMA 125 CRPC DV Act and Section 37 of Special Marriage Act 1954. But the bone of contention is nowhere any specific provision has been made in any statute of the country regarding palimony. Therefore, it has become a very debatable topic whether palimony can be put at par with the provisions of palimony or not. यहाँ तक, बट सुप्रीम कोर्ट अब रिकॉग्नाइज इसको कर रहा है। क्लियर है? तो आपको पेलिमनी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में जो मेंटेनेंस का कंसेप्ट है उसको हम एलिमनी नहीं कहते, क्या कहते हैं? पेलिमनी। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। द सुप्रीम कोर्ट, खत्म बेटा, यही था पेज। किसमें नेक्स्ट केस कर रहे हैं?
जिसमें हमें पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप की कुछ बातचीत हो रही है। क्लियर है? इसमें लिख द सुप्रीम कोर्ट इन, हाँ अब आ रहा है, अलोका कुमार, अलोका अलोका कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, टू 2018 has discussed the issue whether live-in relationship could be considered as de facto marriage. इसको डबल इनवर्टेड कॉमास में कर देना पूरी लाइन. Whether live-in relationship could be considered as de facto marriage. The Supreme Court considered the issue whether civil liability can be fastened, FASTENED, can be fastened on man who walked out of a promise to marry a woman after long cohabitation and a consensual sexual relationship by treating such a relationship as a de facto marriage. De facto marriage को डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर देना. This was a petition of a man challenging order of trial court and high court in case of rape against him in Karnataka. In Karnataka, the petitioner and the daughter of respondent were together for 6 years. The petitioner had promised to marry her but backed down. Back पीछे हट गया, backed down. She was induced for the intercourse during the cohabitation. On that consideration, during the cohabitation, on that consideration and not by free consent. Having regard
to the nature of the case involved, the Supreme Court issued notice to Attorney General of India, उस टाइम के वेणुगोपाल को, पर हम नाम नहीं मेंशन कर रहे, क्लियर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड रिक्वेस्ट द लर्नड अटॉर्नी जनरल to depute an additional solicitor general, इस केस में थे एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, पर उनका भी हम नाम नहीं मेंशन कर रहे, टू असिस्ट द कोर्ट, क्लियर है। इसमें आप लिखते हैं इन नेक्स्ट केस इन उदय गुप्ता UDAY, उदय गुप्ता वर्सेस आयशा AYSHA, आयशा 2014 सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। पिटीशन फाइल्ड by an advocate Uday Gupta challenging the Madras High Court observation regarding the relationship between man and women, and particularly the institution of marriage. Madras High Court had observed that a valid marriage does not necessarily mean that all the customary rights pertaining to the married couple are to be followed and subsequently solemnized. Which are, इसको ना आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर दो, जो अभी तक लिखा ना, अ वैलिड मैरिज से एक बार रीड करना, पहले भी क्या लिखा, अ वैलिड मैरिज, यहाँ तक, which is not legally tenable. Such observations demolish observations, beta. Such observations demolish the very institution of marriage itself, and therefore
are liable to be set aside. The Supreme Court held that such observations had been made in the peculiar facts of that case. In reality, the judge wanted to say, that if a man and women are living together for a very long time as husband and wife, though never married, there would be a presumption of marriage and their children could not be called to be illegitimate. Such a view stands fully fortified by a very large number of judgments. By a very large number of judgments. For example, in Madan Mohan Singh versus Rajnikant, AIR 2010 SC 2933, the Supreme Court held that the law presumes in favor of marriage and against concubinage, concubinage, and against concubinage, when गाइनेज कॉन्कुबाइंस कैसे आप एक्स्ट्रा लेडीज रख रही हैं तो वो नहीं हम मानेंगे. अगर कोई मेल है वो किसी फीमेल के साथ रह रहा है तो हम उसको कॉन्कुबाइन कहते हैं विदाउट एनी लीगल सैंक्शन या विदाउट एनी सोशल सैंक्शन. तो कहते हैं हमने कॉन्कुबाइनेज नहीं प्रमोट करना, हम तो उसको क्या मानेंगे, मैरिज. कहां पर, जहां पर दोनों बहुत टाइम से इकट्ठे रह रहे हैं. हमें नहीं पता मैरिज हुई है नहीं हुई है, पर हम उससे क्या मानेंगे, मैरिज हैज टेकन प्लेस. व्हेन अ मैन and women have cohabited continuously for a number of years. तो ये प्रिजम्पशन ही है. अगर कोई ऐसा एविडेंस दिया जाए जिसका कोई तोड़ ना हो तो ये प्रिजम्पशन रिबट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. फुल स्टॉप. However, such presumption can be rebutted by leading unimpeachable evidence. By leading unimpeachable evidence. ठीक है, प्लीज क्लियर है.
कंक्लूजन लिखिए। Thus, it can be concluded that when any phenomena exists in the society, law cannot sit as a mere spectator. स्पेक्टेटर लॉ देखता नहीं रह सकता, लिव इन रिलेशनशिप में तो कुछ हो नहीं सकता. लॉ रेगुलेट्स human conduct and human behavior. Therefore, the courts are trying to regulate the human behavior even in case of live-in relationship and to confer remedies to the parties who are aggrieved in one way or the other. Though no statute has used the phrase live-in relationship, but such relationship should fall within gamut of GAMUT, within gamut of Domestic Violence Act, as that statute is also applicable to relationship in the nature of marriage. Thus, where a live-in relationship is in the nature of marriage, then it would be protected under Domestic Violence Act. एक मिनट, आपको मैं जजमेंट लिखती हूँ. आपने जजमेंट का नाम लिखो बेटा इसमें.
टेक्स्ट में नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। नाम लिखिए, डी वेलुसेमी, डी डॉट VELU SAMY, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी डॉट पचियामल, PATCHAIANNAL, लिख लिया? लिख लिया बेटा आपने? इसमें लिख लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट held that women in a live-in relationship can claim maintenance under section 125 provided she has to satisfy the condition as follows। ये ना इंदिरा शर्मा से पहले डी वेलुस्वामी का ही केस था जो प्रिवेल करता था बेटा, लिख लिया आपने? फर्स्ट, द कपल must hold themselves, the couple must hold themselves out to society as being akin, AKIN, akin to spouses. Second, they must be of legal age to marry. Third, they must be otherwise qualified. They must be otherwise qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried, sorry, including being unmarried. Next, they must have, कौन सा नंबर है? They must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin, AKIN, akin to spouses. क्या लिखा आगे? As being akin, लगते हैं किसकी तरह? AKIN, akin to spouses for a significant period of time. For a significant period of time. क्लियर है? इसमें लिखिए, thus not all live-in relationship will amount to relationship in the nature of marriage. Under DV Act 2005, to get such benefit,
The conditions mentioned above must be satisfied, and this has to be proved, by evidence. If a man has a keep KEEP, जिसको सिर्फ वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज कर रहे हैं, keep whom he maintains financially and uses mainly for sexual purpose, or as a servant, it would not be a relationship in the nature of marriage. Indian society is changing. Indian society is changing, and this change has been reflected and recognized by the parliament by enacting the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. From why लिखा है कि from है? The Protection of Women from Domestic Violence. Yeah. 5 DV Act 2005 में आया. 15 लिखा है? नहीं 15 नहीं हो सकता बेटा. आप देख लो बेटा 5 ही है. जहां उसे ठीक कर लेना. ठीक कर लो. आप एक बार देखो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. ऐसे नहीं आएगा आपको कि सारा ही पूछ लेंगे. आपको देखना पड़ेगा क्या हिस्सा पूछा है, वो हिस्सा देना है आप. आप देख लो, कुछ पूछना है पूछो, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक. ये जजमेंट्स वैसे बहुत पुरानी है, पर इनकी सिग्निफिकेंस कभी भी खत्म नहीं होगी. हम बात कर रहे हैं सरला मुदगल के केस की. सुना हुआ है ना आपने? ये ना कोई जो अब हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपके एक्ट में टॉपिक है. ये टॉपिक नहीं है बेटा, पर ये इश्यूज हैं जो आपके एक्ट के अंदर भी बहुत मेजर कंसर्न में है. जो 2 जजमेंट्स हम कर रहे हैं ना, ये उतना ही इम्पोर्टेंट ये फैमिली लॉ में भी है. और जब हम आईपीसी करेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, जब बाईगैमी करेंगे, वहां पे भी ये उतनी इंपॉर्टेंट है. पर क्योंकि हमने मैरिज में कहा है कि मोनोगैमी चल सकता है, बाईगैमी नहीं चल सकता, एक टाइम पर एक ही शादी हो सकती है, तो मेन इसमें इश्यू आता है क्या कन्वर्जन. आप अगर एक आदमी 4 शादियां करना चाहता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अपना पहले मुस्लिम बन जाए और एक शादी तो पहले हो ही रखी है और 3 और कर ले? मेन ये इसमें प्रॉब्लम है. क्लियर है? अगर इसका आंसर यस है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इसका आंसर नो है, क्यों? हम कहते हैं जिस लॉ में शादी हुई हो ना, वही लॉ आपको गवर्न करता है. अगर पहली शादी आपकी किस में हुई है? हिंदू मैरिज एक्ट में, तो हिंदू मैरिज एक्ट भी आपको गवर्न करेगा, चाहे आप कन्वर्ट भी कर जाओ मुस्लिम में. प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मुस्लिम बनकर 4 शादियां करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस लॉ में शादी हुई है, उसी लॉ में मैरिज को क्या लो? डाइवोर्स लो. उस वाइफ को डाइवोर्स दो, उसके बाद आप 4 शादियां कर सकते हो.
पहली मैरिज क्योंकि उसी लॉ के अंडर गवर्न कर रही है, आपको उसी लॉ का मैंडेट मानना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इशू लिखिए। पहले आप क्वेश्चन ही लिखिए। क्लियर है? वेदर, ये कोई हिंदू की बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ के ना, हिंदू, सिख, पारसी, सभी में ही क्या है, मोनोगैमी ही है अब। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? अ हिंदू और नॉन हिंदू मेल convert to Islam solely, SOLELY, solely for the second marriage. What would be the validity? What would be the validity of first and second marriage? क्लियर है? जजमेंट्स के नाम ऊपर ही लिख लो, इन जजमेंट्स को हम डिस्कस करें। पहली जजमेंट सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1995 SC 1531। दूसरा जजमेंट लिखिए। लिली थॉमस, LILY, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2000 SC 1650। 5 मिनट का ब्रेक ले।
पहला केस देखिए, सरला मुदगल वर्सेस यून। बेटा हम ना प्रोविजन आपको सारे पता है, अब हम ना हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस का सेक्शन ही रेफर करेंगे। सेक्शन 5 रेफर होगा जो पहला कंडीशन है, नो वन शुड हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। 11 रेफर होगा कि अगर दूसरी शादी होती है तो वो वॉइड है। मतलब हम सिर्फ अब सेक्शन रेफर करेंगे, बार बार मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को हम रेफर नहीं करेंगे। इसमें आप सरला मुदगल का केस, सरला मुदगल का, सरला मुदगल केस लिख लीजिए। These are 4 petitions under Article 32 of the Constitution of India. In all these petitions, husband embraced Islam, Hindu husband लिख लो क्योंकि सारे केसेस में हिंदू ही थे। Hindu husband embraced Islam and thereafter got married. The Supreme Court considered the following issues. Considered the following issues. First, whether a Hindu husband married under Hindu law by embracing Islam can solemnize second marriage. दूसरा, whether such a marriage without having the first marriage dissolved under law would be a valid marriage. अंडर लॉ बेटा, जहां जिसमें भी शादी हुई है ना उसको डिसॉल्व के बिना आपने कन्वर्ट करके अपने आप क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली। वुड बी अ वैलिड मैरिज क्वा QUA, क्वा द फर्स्ट वाइफ who continue to be Hindu. Third, whether the apostate husband, जो कन्वर्ट किया उसको एपोस्टेसी कहते हैं ना, अपोस्टेट, APOSTATE, जो कन्वर्ट कर गया, एपोस्टेट हस्बैंड वुड बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC। क्लियर है? इसमें लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट considered all the following issues and held first, बेटा जजमेंट करना बड़ा टेक्निकल है, हमने इसको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, क्रक्स लिखने हैं, मेन यही है। क्लियर है? इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 क्लॉज I, monogamy is the rule since 1955. It specifically provides that
no person should have his or her spouse living at the time of marriage. The contravention of this condition would render the marriage void under section 11. Clear? Second, the law is already existing in statute book only a correct interpretation has to be given. Third, when the first marriage is solemnized under Hindu Marriage Act 1955, it continued to be governed by the provisions of this act, in spite of the fact of the conversion of husband to Islam religion. Next, such husband cannot affect the rights of his first wife by unilateral fact of conversion to another religion, as those rights are conferred on her by Hindu Marriage Act 1955. Conferred on her by Hindu Marriage Act 1955. Next देखिए, the only solution is that the first marriage should be dissolved by a decree of divorce obtained on any of the ground enumerated in section 13 of Hindu Marriage Act. हाँ बेटा 13 में ये ना divorce of Hindu Marriage Act, and after termination of this marital union, he could marry again in Islam.
नेक्स्ट देखिए, thus the question of validity of second marriage, the question of validity of second marriage is dependent upon the fact whether the first marriage has been dissolved by a decree of divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. If not, then the second marriage by Hindu husband would violate the principle of justice, equity, and good conscience, and would also contravene section 494 of IPC and 494 beta bigamy का of IPC, and he would be guilty of bigamy. क्रक्स यही है, क्वेश्चन कैसा भी आए क्रक्स यही है. इस केस का कंक्लूजन लिखो, लिली थॉमस, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. केस का कंक्लूजन लिखो. 10 सरला मुदगल्स केस. अगर कहीं पर भी बेटा बुक्स भी आती है, लैंडमार्क जजमेंट्स इन फैमिली लॉ, उसमें सरला मुदगल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, बिकॉज एक बहुत भारी प्रॉब्लम थी जो इसने खत्म की है बाय गिविंग अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन टू द एग्जिस्टिंग. कोई नया लॉ नहीं बनाया इस, उन्होंने क्या ठीक इंटरप्रिटेशन दी टू द एग्जिस्टिंग लॉ. क्या लिखा आपने? केस इज अ लैंडमार्क जजमेंट in the history of family, in the history of family and matrimonial causes in India. It gave causes better, causes in India, full stop. It gave a constructive approach towards the concept of apostasy and bigamy, providing a new dimension, beta, dimension to the expression void under section 494 of IPC. It is necessary that there should be harmony. There should be harmony between the two systems of law, between the two systems of law, just as there should be harmony between the two communities. प्रॉब्लम क्या है ये बेटा, हमने इश्यू इसलिए की है, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता ऐसी प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसलिए हमने उसके स्टार्ट इंट्रोडक्शन में देना स्टार्ट कर दिया. क्या लिखा आपने? until UCC बेटा यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी कह रहे हैं. यूसीसी इज इनेक्टेड फॉर ऑल द सिटीजन्स of the country
there will be always a loophole in the system, because different faith have different beliefs, and naturally, due to different beliefs and practices, of communities, there will be conflict. There will be clear. यहाँ हम लेक्चर अभी ना वाइंड अप कर रहे हैं. नेक्स्ट जजमेंट ना लिली थॉमस होगा और साथ ही यूसीसी होगा. एक बार यूसीसी हो जाएगा ना, हमारा 99% खत्म हो जाएगा. हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन बचा है फैमिली लॉ में, सेक्शन 23. साथ में 23A, बाकी सारा हो चुका. साथ में कस्टमरी डाइवोर्स का हम एक शॉर्ट नोट करेंगे. ठीक है प्लीज. और एक बार हम जो डेफिनेशन पोर्शन है ना सेक्शन 3 में, उसको हम रेफर करेंगे अगर कोई डेफिनेशन हमारी रह जाए. अदरवाइज